So this question is very important towards your any competitive exams. Okay, this question is based on the integration. The integral of dt divided by 2at minus t square root over equal to a to the power x sin inverse t by a minus 1. The value of x is how much? So, and this one we have to calculate the value of x here. This x value we have to calculate. The value of x is 1 or minus 1, 0 or 2. Okay, we have to find it. And in case of here this one is your denominator, that is 2at minus t square. Okay, this one the denominator, and this one is also written in here. Taking common is minus, here is taking common, minus taking common, that is t square minus 2at. Okay, now some term adjust, and in case of here this one is also written as minus of t square minus taking bracket of t square, t whole square, minus 2 into a into b is a, so plus of a whole square minus of a whole square. This term is cancel. Okay, and minus a plus a will cancel, we get finally t square minus 2a t. So what shall we get? 2at minus t square is equal to minus, and this one is also written as, so minus t minus a of whole square, okay, minus a square. Now in case of here we multiply the negative sign here, what shall we get? Now we get 2at minus t square is equal to multiply the negative sign minus t minus a of whole square, t minus a of whole square. Now the integrals become this integral. Now integral becomes so integration of dt divided by 2at minus t square over root over is also written as integration dt divided by, and 2at minus t square replaced to a square minus t minus a of whole square over root over. Okay, put t minus a is equal to u. Put t minus a is equal to u. Now differentiate dt is equal to du. Now the integration dt divided by 2at minus t square over root over, and this one is also written as dt replaced to du. Okay, now dt replaced to du, the a square minus u square over root over. Now using the standard integration formula, this one the standard integration formula. Using the standard integration formula, using the standard integration formula. Okay, now using the standard integration formula, that integration formula is du divided by a square minus u square of root over is nothing but sin inverse u by a plus c. C is the integration constant. Now dt divided by 2at minus t square root over is equal to, also written as sin inverse u means what? U means t minus a divided by a. Okay, now c is neglected. So integration dt divided by 2at minus t square
t square root over is equal to sin inverse t by a minus 1. T by a minus 1. The result of our integration here, this result, our final integration is here. The result of our integration is the result of our integration and this one also written as, so the left hand side, here the left hand side is this much, left hand side of value of integration is this much, sin inverse t by a minus 1, and right hand side here, right hand side of the integration is here. Now we have to put it a to the power x sin inverse t minus a minus 1, t by a minus 1. Now compare this both side. In case of here is 1, okay, so that is 1 is equal to a to the power x, and a to the power x is equal to a to the power 0. So x is equal to what? 0. X is equal to 0. That is your final answer in this equation is C. C is your final answer. Okay. पिला माने देखो क्वेश्चन होची केते इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो ए भला इंटीग्रेशन को एते इजीली तुमे सॉल्व करि पारिबो नाही पिला दिस क्वेश्चन इज एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तण ए टाइप रो क्वेश्चन तुमे केमिति सॉल्व करिवो न जानिले तो एको सॉल्व करेटा इजी नो ना देखो एठी मु कोन कली जो डिनोमिनेटर लिखि छि देखो पिला माने देखो डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन dt बाय 280 - t स्क्वायर ये जो डिनोमिनेटर को मु कोन कली तुमे गोटा पढी थिबो पूर्ण भग्नांश रे ना पूर्ण वर्ग रे परिणत कर पढ़ा ही तुम गोटे स्कूल लेवल पढ़ीच कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं पूर्ण वर्ग रे परिणत कर से भाया जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ी ता कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मुझे सॉल्व कले कौन कले माइनस साइन कमन नहीं गले कमन नहीं गला पर कौन कले आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म लिखापी ये प्लस ए स्क्वायर आड कले स्क्वायर सबट्राक्ट कले तापर ए माइनस बी होल स्क्वायर करदे ये माइनस ए अच्छे या लिखिले तापर ये कौन माइनस साइन को मल्टीप्लाई करदे या माइनस एमती आम लिखिलु एगो इंटीग्रेशन फॉर्मल देख यहाँ हूँ आम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नाउ इंटीग्रलटा ये फॉर्म हो टी माइनस ए को म्यू नहीं गले डी टी को गले डी यू होगा तापर इंटीग्रेशन सॉल्व कले गोटे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अच्छी इंटीग्रेशन डी यू डिवाइड स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रूट ओवर अच्छे यार स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यहाँ हूँ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला देखो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यार इंटीग्रेशन एतिक अच्छी तार सब्स्टिट्यूट करदे यूरो वैल्यू पुट करदे यूरो वैल्यू पुट कलापर ये को आम डिवाइड करदे इंडिविजुअली तापर रिजल्ट ऑफ आवर इंटीग्रेशन कौन हो देखो ये जो रिजल्ट ऑफ आवर इंटीग्रेशन ये जो पार्टा को आम जो क्वेश्चन जो पार्ट अच्छे देखो यही पार्ट आम इंटीग्रेशन सॉल्व कलु यही पार्ट तो जहाँ एलएचएस साइड को सॉरी आरएचएस साइड को आम से एक्जाक्ट कॉपी पेस्ट मारदेलु तो यहाँ हूँ आरएचएस साइड यहाँ हूँ एलएचएस साइड आम ये सॉल्व कलु सॉल्व कलापर दुटा इक्वेशन आम कंपेयर कलु देखो यही पार्ट एतिकी पार्टा हो एपट भी सामान अच्छे तो यहाँ सहित सामान हम तो एक्स रही के 0 हेल्ले सामान हम ना नहीं पे मैंने जदि भिडियोटी भल लगुव जदि भल लगुच लाइक कर शेयर कर और सब्सक्राइब कर जमारू भूलब ना तो एमतीका वीडियो जानापी तुम्हें प्लेलिस्ट को जाओ बहुत सारा वीडियो मुझे अपलोड कर देछि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई ओके थैंक यू फॉर योर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मन रख सब प्रैक्टिस कर जेकोसी क्वेश्चन देखिल यही टाइप क्वेश्चन जिते सारा प्रॉब्लम अच्छी तुमको प्रैक्टिस कले तुम जापर विदाउट प्रैक्टिस तुम केवे भी जापर तेणु प्रैक्टिस कर निश्चित एग्जाम रे भल रिजल्ट कर थैंक यू।